You're watching DD India News Hour. I'm Mark Lynn. On his tour to Poland, Prime Minister Narendra Modi also met business leaders. The Prime Minister met with Ms. Alina Polunzi, the MD of TZMO India, a leading Polish manufacturer of diversified hygiene products. Prime Minister highlighted various policies and initiatives such as the Make in India campaign and the recent liberalization in foreign direct investment in the policies in India being taken in India. And they also exchanged views on TZMO's or TZMO's expansion plans given the thriving market and investment opportunities in India. Prime Minister also met with Gavel Lopinski, who is the CEO of Belenium Private Limited, which is a prominent Polish IT company with a notable presence in Pune. The Prime Minister assured Mr. Lopinski that India's commitment will remain to ease of doing business and investment-friendly environment. Prime Minister Narendra Modi met the Polish prominent Indologists as well in Warsaw. Professor Maria Christopher Berecki is a distinguished Polish Sanskrit scholar and Professor Emeritus of the University of Warsaw. Professor Berecki has served as the ambassador of Poland to India from 1993 to 1996 and was conferred with the Padma Shri Award by the President of India in 2022. Professor Halina Marcewicz is a prominent Polish scholar in Indian philosophy and the head of the Institute of Oriental Studies of the Jagiellonian University in Krakow. And Professor Danuta Stasisk is a prominent Polish Indologist and a former head of the Department of South Asian Studies at the University of Warsaw. Professor Przemysław Zuzrek is a renowned Polish Indologist and the head of the Indian Studies of India or Indian Studies in the University of Wrocław. हम बहुत ही खुश हैं कि 40 वर्ष से ज़्यादा के बाद फिर भारत के प्रधानमंत्री आ गए और वही प्रधानमंत्री जिन्होंने उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्थापना की और जिससे भारत की संस्कृति का दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है। आज के मिलन के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि प्रधानमंत्री बहुत ही इस पर ध्यान देते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की प्राचीन चिंतन जो है वो हमारे विश्व में बढ़ जाए और हमसे उन्होंने ये कहा कि हम इस सेवा में हमको करना कोशिश करना है कि लोग ज़्यादा जान लें, न सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि यही सांस्कृतिक पक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है, ये इस पर हमने प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया और हमसे आखिर में हमसे कहा कि आप कोशिश कीजिए कि भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान और चिंतन लोग जान लें, समझ लें अच्छी तरह से। ये तथाकथित इंडोलॉजिस्ट का कर्तव्य है।